Good morning students. Class 7, chapter number 15, perimeter and area, exercise 15.4. In the previous video, we have completed exercise 15.4 up to question number 8. Now we discuss question number 9. In the question number 9, a circle is inscribed in a square of side 28 centimeter. It means it is given that side of a square is 28 centimeter and we have to find out area of a circle. Area of a circle we have to find out. अब इस क्वेश्चन में मेन बात क्या गिवन है कि सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर. सपोज इट इज अ सर्किल एंड वी ड्रॉ अ स्क्वायर लाइक दिस. So we can say that the circle is inscribed in a square. Square whose all sides are equal and each angle is 90 degree. So we just name it ABCD is a square and is a circle with center O. And the side of the square is 28 centimeter. So now how can we calculate area of the circle? We know that the formula of area of circle is pi r square unit square. But in this question the value of r we don't know. So firstly find out value of r, then calculate area. Now to find out value of r, we observe that 28 centimeter, which is side of a square. It is also called diameter of the square circle. It is also called diameter of the circle. So diameter of the circle is 28 centimeter. Its mean radius of the circle is 14 centimeter, because we know that diameter is half of, diameter is double of radius, or radius is half of diameter. So we can say that diameter of circle is equal to side of a square. So its mean, its value is 28 centimeter. So we can say that radius of the circle is, so radius of circle is equal to half of 28 centimeter, which means 14 centimeter. Now we calculate area of the circle. So finally area of circle is equal to pi r square, which means 22 upon 7 into 14 square. So 22 upon 7 multiply 14 multiply 14, and the after multiplication the value we obtained is 616 centimeter square. So I sure the question is clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 10. In the question number 10, the ratio of radii of the two circles is 3:5. दो सर्किल्स हैं जिनकी रेडियस के बीच में 3 और 5 की रेशियो है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर एरियाज. तो फर्स्टली क्योंकि वहाँ पर दो सर्किल्स कंसीडर हैं, तो वी सपोज दैट कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज r1 and radius of second circle is r2. So r1 ratio r2 is equal to 3:5. या आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो, r1 upon r2 is equal to 3/5. Now we have to calculate ratio between areas of two circles. सबसे पहले we know that area of circle formula, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर.
यूनिट स्क्वायर। सो ये सर्किल के एरिया का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ सर्किल इन बोथ सर्किल्स। इट्स मीन एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल पाई r1 स्क्वायर एंड सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड सर्किल पाई r2 स्क्वायर। Now we calculate ratio between areas of circle. The ratio between areas of two circles. It's mean pi r1 square ratio pi r2 square. It's mean pi r1 square upon pi r2 square. Pi से pi cancel out. It's mean r1 square upon r2 square. And according to the law of exponent, we can take power 2 common. It means r1 upon r2 whole square, and the value of r1 upon r2 just calculate 3 upon 5. It means the value is 9 upon 25, because square of 3 is 9 and square of 5 is 25. So finally required ratio is equal to 9:25. It's a final answer. So I sure the question is clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 11. In the question number 11, the circumference of a circle is given 110 centimeter. I again repeat, circumference. Circumference means the boundary of the circle. It is called circumference. So in this question, circumference is given 110 centimeter and we have to calculate its area. So firstly we use the formula of circumference and calculate value of r, and then using the formula of area of circle calculate area. So what is the formula of circumference of a circle? 2 pi r is equal to 110 centimeter. The value of pi 22/7, and the value of r is 110 multiply 7 upon 2 multiply 22. The value of r is 35 upon 2 centimeter. Now we calculate area, and we know that area of circle is equal to pi r square. It means 22/7 multiply 35 upon 2 multiply 35 upon 2. It means 55 multiply 35 upon 2. 55 multiply 35. It means the value we obtained is 1925. 1925 upon 2 centimeter square, and after calculating the value we obtained is 962.50 meter square. Sorry, centimeter square. So finally area of the circle equal to this. I sure the question is clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 14. In the question number 14, a horse has been tied to a peg at A. यानी कि यहाँ से घोड़े को बांधा गया है
इन द कॉर्नर ऑफ अ फेंस्ड गार्डन, यानी कि ये गार्डन है, गार्डन के एक कोने पर घोड़े को बांधा गया है विद अ रोप एंड द लेंथ ऑफ द रोप इज 12.6 मीटर। तो रोप की लेंथ 12.6 मीटर लॉन्ग एंड एट अ पॉइंट बी देयर इज अनदर पेग टू विच अ गोट इज टाइड। यहाँ पर एक बकरी को बांधा गया है विद अ रोप 4.2 मीटर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज दे कैन ग्रेज। तो वी ऑब्जर्व दैट, तो जो हॉर्स है वो कौन सा एरिया ग्रेज कर सकता है, दिस एरिया, एंड द गोट कैन ग्रेज दिस एरिया। तो पहले तो हम उनकी शेप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हॉर्स ने जिस एरिया को ग्रेज किया उसकी शेप कैसी है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हॉर्स ने एरिया ग्रेज करा इट इज 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी कि क्वाड्रेंट। और गोट ने जो एरिया ग्रेज करा है वो हमारे पास एक सर्कुलर एरिया है, यानी कि सर्कुलर रीजन। सो फॉर द हॉर्स वी कैलकुलेट एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट एंड फॉर द गोट वी कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्किल। तो फर्स्टली वी कैलकुलेट एरिया ऑफ द गार्डन ग्रेज बाय हॉर्स। एरिया ऑफ गार्डन यानी कि गार्डन का वो एरिया जो कि ग्रेज किया गया हॉर्स के द्वारा। एरिया ऑफ द गार्डन ग्रेज बाय हॉर्स, इट्स मीन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एंड वी नो दैट क्वाड्रेंट इज अ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एंड अगर हम सर्किल कंप्लीट करते हैं देन 12.6 इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो पाई इंटू 12.6 होल स्क्वायर अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जो हॉर्स ने ग्रेज किया। हम जस्ट को ही स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें फाइनली दोनों के एरिया में रेशियो कैलकुलेट करनी है। नाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ द गार्डन ग्रेज्ड बाय गोट। तो एरिया ऑफ गार्डन ग्रेज्ड बाय गोट, तो वी ऑब्जर्व दैट इट इज द एरिया ऑफ सर्किल। तो सिंपली पाई एंड ऑब्जर्व दैट रेडियस इज 4.2 मीटर। So pi into 4.2 whole square meter square. Now we have to calculate ratio between areas they can grade and key required ratio. Now we calculate required ratio. So firstly we note down area of the garden graded by hose. It's mean pi into 12.6 whole square upon 4 and in the denominator area of the garden graced by 4 and give pi into 4.2 whole square. Now simplify and find out answer. Pi into 12.6 into 12.6 in the denominator, pi into 4 into 4.2 into 4.2, pi से pi cancel out, decimal remove, 42 3 जा 126, 42 3 जा 126, it means 9/4. So required ratio is 9/4. तो I sure question number 14 is clear. Just note down in the next video we continue exercise 15.4. Thank you very much.